Today's class is about microorganisms, friends and foe. So here we will study about the microorganisms and how they are useful and how they harm us and our environment. So let's start. Let's start with introduction. If you observe a drop of water in a pond through a microscope, you will see a lot of tiny rounded structures. These tiny creatures are known as microbes or microorganisms. They are all around us and are so small in size that they cannot be seen with the bare human eyes. Microbes are classified into four groups, that is protozoa, then bacteria, virus, then fungi, then algae. So, what are microorganisms? Microorganisms are microscopic organisms that cannot be seen with the naked eyes. That is, we cannot see microorganisms without microscope. They are very tiny that we cannot observe them through naked eyes. We need a microscope to observe them or to see them. And these microorganisms are usually unicellular in nature, that is they are made of only single cell. And microorganisms are very useful to us. They are like friends to us for many reasons and foes to us for many reasons. Now we will talk about the first microorganisms, that is bacteria. Bacteria is available everywhere. We can see bacteria everywhere. Like bacteria is present in air, bacteria is present in water. That is a difference that we cannot see through naked eyes. We need a microscope to observe them because they are very tiny organisms. Bacteria are unicellular prokaryotic organisms. That is, bacteria are also made of single cell. Some bacteria are useful for humans while some can be harmful. They are of four major types, that is Bacillus, Vibrio, Cocci and Spirilla. Now, what is probiotics? Probiotics are the live bacteria and yeast that are good for your health, especially the digestive systems. That's why we usually see that probiotics are present in the curd and all. So when you buy a curd, you see that is a probiotics curd that is good for your health. Now, let's talk about fungi. Fungi are saprophytic or parasitic organisms. They are mostly multicellular and not microscopic. However, yeast is a unicellular and microscopic organism. That is, fungi जो होते हैं dead and decaying organic matter पे feed करते हैं for their survival. और वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते क्योंकि हम ब्रेड पे मोल्ड देख सकते हैं. रॉटन आप ऑरेंजेस देखोगे उसमें भी हमें फंजाई दिखते हैं. तो फंजाई वी कैन सी फ्रॉम नेकेड आइज. दैट्स वाई दे आर नॉट माइक्रोस्कोपिक. फिर हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं. फर्मेंटेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट सुगर्स टू द एसिड गैसेस और एल्कोहल. फर्मेंटेशन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड एंड द एल्कोहल. तो यही है फर्मेंटेशन में हम फंजाई को यूज़ करके क्या करते हैं, शुगर को एसिड गैसेस और अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और ये कर्ड और अल्कोहल बनाने में यूज़ हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वायरसेस. वायरसेस आर ऑर्गेनिजम्स दैट पोसेस न्यूक्लिक एसिड बट लैक रिप्लिकेटिंग मशीनरी. तो वायरसेस क्या होते हैं, उसमें न्यूक्लिक एसिड तो होते हैं पर वो रिप्लिकेटिंग मशीनरी को लैक करते हैं. दस अ वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ लिविंग सेल. तो उनके पास जब रेप्लिकेटिंग मशीनरी ही नहीं है तो वो कैसे बिना सेल के सर्वाइव करेंगे. इसलिए वायरस के सर्वाइवल के लिए एक लिविंग सेल में उनका रहना बहुत ज़रूरी है. वायरसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज़. तो वायरसेस जो होते हैं वो एज अ पैरासाइट रहते हैं ऑन द होस्ट सेल ताकि उनकी लिविंग मशीनरी को यूज़ कर सके. फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस आर इन्फ्लुएंजा वायरसेस, HIV, रेबीज वायरसेस, पोलियो वायरसेस, टोबैको मोजाइक वायरसेस,
and etc. Now, what is protozoa? Protozoa are single-celled microscopic animals which includes flagellates, ciliates, sporozoans and many other forms. तो flagellates में flagella होता है, ciliates में cilia होता है एंड sporozoans जो होते हैं ये हमारे मेजर प्रोटोजोन है जो मलेरिया डिजीज कॉज करते हैं. तो मलेरिया डिजीज का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? प्रोटोजोआ. एंड उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? स्पोरोजोन्स. अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल के प्रोटोजोन्स का तो अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर एमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जो होता है वो आपका क्या नाम है मलेरिया काउज करवाता है. पैरामीशियम जो होता है वो स्लीपर सेप्ड का होता है. एमेबा जो होता है वो इनगल्फ करता है फूड में.